be a dreamer and a ode. So our guest for today, he dreamed of success and he achieved it as well. Good evening, everyone. Today's guest is one of my personal favorite. Sir has been my college dean. He has taught me oral medicine and radiology. And don't feel surprised, guys, if I tell you that you too read Sir's book for oral medicine and radiology. Yep, guys, it's Dr. Anil Ghom, sir, Dean, Maitri Dental College, Anjora, Durg, author of two very famous textbook of oral medicine and radiology, named Textbook of Oral Medicine and Basics of Oral Radiology. A lively-hearted person, Dr. Anil Ghom, sir. Let's call him in the show. Good evening, sir. How are you? Good evening. I'm very fine. Thank you very much, Ganendra, for inviting me for this your program. It's a really pleasure to have you in this program. Thank you very And I much. will tell all the students Ganendra is one of the very intellectual intern we had in our Maitri Dental College. Thank you very much, sir. To be very honest, sir, I always wanted to know the story behind your success. So, first thing first, how did you choose dentistry? I mean, long back in 1994, what was the situation of dentistry, and how did you get into government dental college Nagpur? Actually, at that time, we have got admission usually on basis on the 12th mark, and we had to go to the colleges to individual colleges to apply for that particular course. So in after passing my 12th, I just went to Nagpur to get admission in the MBBS, Government Medical College. And after going there, someone told me that there is also one course that is called as BDS or dental surgery. So at that time, I am from Delhi, basically village background. So I don't know that dentist is the separate branch, separate subject. So they told just go and apply also there. So I applied to the Government Enterprise Nagpur course also. But then somewhat initial level I didn't get the admission. So I joined BSc for 1 year in the Bombay. In Bombay, my brother stays. So in the just I am about to give the final exam of the BSc. I got a call for the BDS admission in the GDC Nagpur. At that time, we used to get the call through the telegramming message. So I just went there. I just see written. So there is only one seat is vacant at that time, and 3 applicants are there to take the admission. And at that time, admission is basically based on the PCB mark, physics, chemistry, biology. All the 3 of the students, they got the same mark in the PCB. Then another criteria, if you got the same mark in the PCB, then you get the aggregate mark. So fortunately, I got one more additional mark compared to other 2 students in the aggregate. So I got the admission, and at that time also I have to pay the fees around 600 rupees for the admission, and I'm from the very poor background, so I don't have that money. But one student who has come to take the admission, he given me that 500 rupees at that time. I think 1990, 500 rupees is given by somebody else who don't know me. It is a great sense of humanity. At that time I realized that God is there to take care of the people. And he given me 500 rupees, and I take that admission under the BDS. Yes, somewhat it is come to me by chance, and it shows that God has all the power to decide what our fate is. We have to just rely on the God. So that's why I got admitted into course of dentistry. Okay. That won't be wrong, sir. कि जो वो आए थे वो he was a god to you that time. Definitely, he has come as a God. He was given at that time, if I'm not able to pay the fees, that admission has gone to him. Yeah. But somewhat at that time, he's given me his money he's having, and I told him I will return him back money, and I'd return it. But timely has given the money. At really, it is a miracle. Yeah. So that is the reason I got admitted in the BDS. So sir, you continued in GDC Nagpur. Nagpur for your BDS. Sir, among all the 9 departments, why did you opt for oral medicine and radiology for your MDS? I mean, आप सर एंडो कर सकते थे, आप सर पीडो कर सकते थे, बट कुछ ऐसा इंटरेस्ट अलग से था आपको कि आपने ओरल मेडिसिन किया?
not basically like interest कि जब एग्जाम दिया तो आई फेल इन द सब्जेक्ट ऑफ ओरल मेडिसिन. सो जब मैं ओरल मेडिसिन जब मैं फेल हुआ तो उस समय ऐसा था कि वी गेट एडमिशन इन द पीजी कोर्स कि तुमको जो सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क मिलते थे वो सब्जेक्ट में तुमको एडमिशन मिलती थी. सो आई फेल इन ओरल मेडिसिन. आई स्टडीड ओरल मेडिसिन फॉर ड्यूरेशन ऑफ द 6 months. Then I given the and I get top. Second time I'm top in the subject of oral medicine. And oral medicine is basically I like that subject being the radiology as well as medicine. So interest is there. I top and next year I got admission in the MDS oral medicine. So this was very new thing to get learned about you. Ki success for failure is the first path of success basically, and you are a Definitely, living definitely. legend example of that, sir. That's You great, sir. take failure as a challenge to your life. Failure means it doesn't. You shouldn't get depressed. कि तुम फेल हो गए तो इसके बाद क्या होगा. फेल होना इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लाइफ इज लाइक ईसीजी, अप्स एंड डाउन चलते रहते. जहाँ अप्स है वहाँ डाउन होना है. तो जहाँ डाउन है तो जस्ट होप फॉर द अप्स एंड डू योर बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस. Nobody remembers the hardship you have faced Yeah. in the coming to that position or coming to the success. Mm-hmm. चलता है फेलियर तो चलता है. Yeah, failures तो उसके चलते से ही सक्सेस रहते का मजा थोड़ी है. हैं. That's good, sir. हाँ sir. So what was the idea behind writing this great book, sir? बुक्स का एक्चुअल में ऐसा था कि जब मैं ओरल मेडिसिन में फेल हुआ था तो मैं वो बुक जब पढ़ता था लाइब्रेरी में, तो उस समय ऐसा था कि मुझे वो बुक जो बर्किट जो हमारे समय बुक था जो रिकमेंडेड था पढ़ते थे, तो वो बुक बहुत डिफिकल्ट था. इट्स वेरी हेपेजाइट टाइप से था. तो उसी समय मुझे लगा कि लेट्स राइट सम बुक की जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में आसानी हुई. तो उस समय देन मैं आई यूज्ड टू राइट डाउन द नोट्स. मैं नोट्स निकाल कर रखता था कि तो आगे जाके मैं इस पे बुक लिखूंगा. मतलब उस समय मेरे जो कलीग थे उनको बोलता भी था मेरे को बुक्स लिखना है, तो हंसते थे, यार तू कुछ भी बात करता करके. तो देन आई गॉट पीजी इन द ओरल मेडिसिन. तो फॉर्चुनेटली फिर उसके बाद मैंने वो बुक्स लिखने का जो नोट्स निकालने का काम चालू किया, लिखना चालू किया. देन मैं उसके बाद देन आई गॉट जॉब इन द लोनी, लोनी. Then I got continuous to write the book. So it takes around me 6 years to compile the book. Then fortunately JP publisher approaches me. Then उसके बाद initially some pattern was different, but ultimately it come out. So first time I had a book published. I did in 2003 that first edition of Oral Medicine come. At that time I just have the inauguration. All my teachers from the GDC Nagpur, they have come for the inauguration. Okay. They are all shocked कि I can write the book because I am not कि the student type का person तो कभी था ही नहीं. Yeah. And fortunately that book click, and I can tell now that book is very मतलब India as well as Middle East as well as Europe country. Yeah, sir. उसमें भी चलता है. And now then I write the radiology book. Then I write this pathology book also there. Then one book mine is published in the Spanish language. Okay. That is in the Spanish country. Okay. So that goes on. Okay. Sir, what were the basic problems that you faced during writing a book? I mean, क्या-क्या दिक्कतें आई थी आपको? Initially the दिक्कत मतलब discouragement. मतलब जिनको मैं बोलता था कि मैं बुक लिख रहा हूँ तो people दे ला, अरे अपन तुम थोड़ी बुक लिख सकते, इंडियन ऑथर की बुक चलते नहीं है. मतलब इवन व्हेन आई एम द लोनी फाइनेंस का मैं बोला था हमारे जो कॉलेज के मैनेजमेंट है कि मेरे को बुक लिखना है तो मेरे को कुछ पब्लिश करने के लिए फाइनेंस करो. तो दे आल्सो डिस्करेज कि ही इज वेरी जूनियर, ये कैसे बुक लिख पाएगा. And then somewhat one publisher I got contact. I send him sample chapter. And then it's मतलब उसके बाद वो चीजें वर्कआउट होती गई. वैसे तो it is only thing कि you should just try and leave it to the God, and one day God will give you the direction to how it will go. Yeah, अगर actually, तुम sir. डेफिनेटली विदाउट अगर तुम हारे, तुम ट्राई करते रहोगे तो ट्राई को तुम्हारा रिजल्ट मिलना ही है. बिल्कुल सर. Sir, coming towards the next question, sir, leaving a lavish dental practice, what made you choose into academics, sir? आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे, नो डाउट आप करते हैं,
बट अब ज़्यादा ध्यान एकेडमिक्स में देते हैं सर, तो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट इज़? इनिशियल लेवल से मतलब जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उस समय आई गॉट वेरी अट्रैक्शन की जो हमारे स्टाफ रहते थे जो पढ़ाते थे, हुँ, द वे दे टीच, तो मुझे अच्छा लगता था कि भैया ये जो स्टाफ पढ़ा रहता है एकेडमिक्स में। तो धीरे धीरे देन आई व्हेन थिंकिंग अबाउट राइटिंग द बुक, तो इफ यू आर गोइंग टू राइट द बुक दैट इज अ पैशन, तो डेफिनेटली आई कैन गो फॉर प्रैक्टिस एंड राइट द बुक। हुँ, 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 So then I started join my to be wife also. She is also there in the Loni. वो तो मेरे साथ में ही पढ़ी. हुँ, तो हुँ, हुँ, उसमें and then I got interested in academics, and then once I entered the academics, once I started writing the book, I don't think there is any point I should looking back to go for the practice. हुँ, Practice हुँ, definitely has the his own charm, हुँ, 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 and हुँ, academics has its own charm. हर हुँ, एक का अपना charm रहता है. ओके सर। Sir, being a dean, you have a great responsibility upon your shoulder to keep up your position. What is your vision behind this, sir? Dean basically it's called as the thankless job. मतलब Dean is basically the bridge between the management staff and the student, Mhm, and it's not easy job. मतलब sometimes you have to take the decisions which are not the student friendly, which are not the staff friendly, or something which are not the management friendly. But it is only first we have to make balance between the three aspects, and without spoiling your own personal relation, because being a dean we have got very good relation with the staff member, but at that same time you can't उनको अपन उतनी लीवे भी नहीं दे सकते कि उनको डिसिप्लिन खराब हो। बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द वेरी डेलिकेट एस्पेक्ट ऑफ द एनी कॉलेज। उनका जो ये रहता है कि उनको संभालना इट्स नॉट इजी जॉब। मतलब एनी टाइम डिसिप्लिनरी एक्शन है ऑन द स्टूडेंट। मैं हार्डली टेक डिसिप्लिन एक्शन। मतलब तुमको पता होगा कि कंप्लेंट आते हैं तो आई हाँ यूजुअली सर। थिंक कि ऑल कंप्लेंट शुड बी सॉल्व रीजनेबली वेल। मतलब अदरवाइज इट्स इज बहुत आसान है कि अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिन, किसी को सस्पेंड करना, किसी को रस्टिकेट करना, या फिर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसको आगे प्रोसीड करना। बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों स्टूडेंट के दो तीन ग्रुप को आपस में उनको ये करके मेंटेन करके उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि स्टूडेंट शुड बी द इन द फ्रेंडली वे। एंड आई ज्वाइन एज अ डीन इन द मैत्री डेंटल कॉलेज, और मैत्री डेंटल कॉलेज इज द वेरी चैलेंजिंग कॉलेज। मतलब वहाँ पर इनिशियल लेवल पे मतलब तुमको पता है कि इट इज वेरी पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट, Yes, sir. पॉलिटिकल एक्टिव Actually, एज कम्पेयर Maitri is a very टू active, politically active in student politics. I have तो seen मतलब that बहुत phase. एक्टिव है। हाँ। अदरवाइज बाकी जैसे भी कंपेयर अदर कॉलेज उतना इतना ही है, लेकिन अपना मैत्री कॉलेज स्टूडेंट है वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। हम्म, 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 तो हम्म। मैत्री कॉलेज का डीन मतलब इट्स वेरी मतलब It's a इतना really. डिफिकल्ट पोजीशन थी मतलब। हम्म, एंड व्हेन आई एम इन द राजनांदगांव कॉलेज, मेरे स्टूडेंट के साथ बेसिकली माय नेचर इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। मैं यूजुअली स्टूडेंट के साथ मस्ती करना ये करना अच्छा लगता था। लेकिन बीइंग अ पोजीशन ऑफ द डीन, मेरे को मेरा जो बेसिक नेचर था वो मेरे को पूरा तोड़ना पड़ा, क्योंकि एज अ डीन मतलब आई कैन इफ आई गिव सम, मतलब जिनका थोड़े अच्छे भी टर्म्स बने तो एक ऐसा लगता है कि एज अ डीन की पोस्ट को ना वो पार्सलिटी टाइप एक लगेगा, फिर स्टूडेंट को लगेगा यार ये इसको फेवर कर रहा वो कर रहा। तो फॉर दैट रीजन आई यूजुअली अवॉइड टू बी हैव इन द मोर क्लोज कांटेक्ट विद द स्टूडेंट इन द मैत्री डेंटल कॉलेज। अदरवाइज इन द सिटी सारा मतलब एवरी पिकनिक विद द स्टूडेंट आई वेंट विद एवरी पिकनिक विद द स्टूडेंट। Actually, दिस इज sir, your students have been my teachers, sir, and I have been listening about you as an HOD of a department, you as a teacher to them. बराबर है। Yeah. हाँ. बहुत Uh, डिफरेंट था मतलब। तो मैत्री में मेरे को थोड़ा डिसिप्लिन में रहने के कारण मेरा जो नेचर नहीं था, आई टू गो अगेंस्ट माय नेचर टू हम्म, एकदम स्टूडेंट से दूर रहना पड़ा मेरे को। लेकिन हम्म, चलता है, दैट इज समथिंग वी हैव टू सैक्रिफाइस, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। yeah, it's okay, sir. Sir, how was your journey from BDS first year to Dean of Maitri College of Dentistry and Research Center? I mean, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए होंगे, बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लेने पड़े होंगे आपको, बहुत तो कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट की होंगी, कुछ चीज़ों ने आपका दिल तोड़ा होगा। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको मोटिवेट किया हो, जिसके वजह से आपका दिल टूटा हो, या आई मीन ऐसा अप्स एंड डाउन्स वाला कोई सिचुएशन? हाँ, फर्स्ट वीडियो बेसिकली मतलब माय बैकग्राउंड इज वेरी फ्रॉम द पुअर फैमिली। माय फादर इज द टीचर, मतलब स्कूल टीचर, एंड वी गॉट सिक्स ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब फोर ब्रदर एंड टू सिस्टर। बिग बिग फैमिली with the very limited source of income. So when I joined the first BDS, and I'm not as such that so much of studious person तो कभी था नहीं इतना ज्यादा। तो इनिशियल ऑल द लाइफ इज गॉन इन वेरी इकोनॉमिकली एकदम
ये था लिमिटेड लाइफ थी। धीरे धीरे my first year I clear जैसे जैसे second year then third year I fail again in the two subject. Final year again I fail. All this failure make me very strong. Then I internship, then I do the job after BDS for the 1 year. तो वन इंसिडेंस बेसिकली मतलब उस समय मेरा नेचर ऐसा था कि मैं कुछ भी करता था। मतलब वो एक दिन जैसे मेरा एक फ्रेंड आया, वो हम दोनों ऐसी मूवी देखने गए, तो मैं बोला यार लोग डाइजिपम क्यों लेते होंगे यार, मतलब खाते होंगे, क्या होगा अगर अपन ने 10 डाइजिपम खा लिया तो मैं जस्ट गया दो मेडिकल स्टोर में, उसको मांगा डाइजिपम दो करके 10। तो मेरा दोस्त भी था तो उसके सामने तो लिया, मूवी वगैरह देख के आए, फिर रात को 12 बजे बोला मैं दोस्त को, देखा मैं 10 डाइजिपम खा के सो रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं सवेरे उठा नहीं ना, मेरे उठा जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, निपट जाऊंगा। देन आई टेकन दैट, और मेडिकल स्टोर ने वो डाइजीफार्म की जगह सीएनएस स्टिमुलेंट दिया था, एमिट्रिप्टिन। तो मैंने 10 टैबलेट खाया एंड आई वेक अप आफ्टर 36 आवर। 36 आवर आई एम टोटली अनकॉन्शियस। मतलब ऐसा किसी को लगा नहीं था कि आई विल सर्वाइव। तो 36 घंटे तो मैं टोटल अनकॉन्शियस था। देन आफ्टर 36 आवर आई जस्ट वेक अप, तो देखा कि सब लोग सामने खड़े थे, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो दैट इंसिडेंट बेसिकली मतलब चेंज माय, मतलब ऐसा लगा कि अपन ने, यू शुड ऐसा नहीं करना चाहिए कि लाइफ में यू शुड बी सो केयरलेस दैट समथिंग शुड बी कम टू योर लाइफ आल्सो। देन उसके बाद आई चेंज अ लॉट आफ्टर दैट इंसिडेंट एंड आफ्टर माय सविता एंटर माय लाइफ। मतलब दैट टू इंसिडेंट्स से कारण मुझे बहुत फर्क पड़ा मेरे आगे की जिंदगी। वेल सर, मैम का नाम इतना लिया जा रहा है तो लेट मी आस्क यू, देर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन एंड दैट इज एग्जैक्टली द केस विथ यू सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेफिनेटली। सो हाँ, आप कुछ ऐसा इंसिडेंट मैम से कैसे मिले, फिर आगे क्या हुआ, अगर इफ हाँ आपको। नहीं डेफिनेटली, सी इज माय बैचमेट। मतलब हम वी ज्वाइन इन द सेम बैच, सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड फॉर अराउंड 3 इयर्स। 3 साल तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हम्म, तो आप इन थर्ड ईयर आफ्टर दैट इंसिडेंस ऑल्सो हमको हम दोनों के बीच में मतलब वी फॉल इन लव विद ईच अदर एंड वट एवर आई एम टुडे इज बेसिकली ऑल क्रेडिट गोस टू हर। मतलब अगर वो मेरे जिंदगी में रहती तो मैं कई कई बार एक मतलब एक छोटे से गांव में एक बीडीएस प्रैक्टिस कर सकता था। मतलब आज ये पोजीशन में होता था। मतलब आज जो कुछ भी मैं पर वो मतलब ऑल क्रेडिट गोस टू हर। मतलब लव कैन चेंज योर लाइफ। मतलब वो एंड सी इज द परफेक्ट एग्जांपल कि तुम प्यार से किसी को भी बता सकते। मतलब टुडे आई एम डीन ऑफ द कॉलेज, आई ओन वन फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई ओन मल्टीस्पेशलिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल। These are all credits goes to her only. मतलब she is there with my thick and thin, always supporting. And हमारा बेसिक प्रिंसिपल जस्ट एंजॉय द लाइफ एंड लेट अदर पीपल एंजॉय द लाइफ। मतलब बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दो, ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। Yeah. And that's good to hear that, sir. So, guys, love is always not bad. If taken into a positive way, it can change even your lives. डेफिनेटली। Yes. Sir, coming towards dentistry again, as dentistry is losing its charm, I mean, students take it as a second option. Like, if they didn't get MBBS, they move on to dentistry. मतलब उनको लगता है कि ठीक है, डेंटिस्ट्री एक सेकंड ऑप्शन है। तो सर आपको क्या लगता है, सिंस यू हैव बीन सो एक्सपीरियंस्ड अबाउट डेंटिस्ट्री, आपको मतलब डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर, कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे कि सर डेंटिस्ट्री हमको भी पता है और आपको भी पता है, इट्स नॉट एन सेकंड ऑप्शन, एक्चुअली इफ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन बी सक्सेसफुल एंड इवन यू आर सक्सेसफुल सर आफ्टर डूइंग डेंटिस्ट्री। सो क्या बोलना चाहेंगे सर आप स्टूडेंट्स को। डेंटिस्ट्री में देखो उसका एक अलग चार्म है। तो डेंटिस्ट को बेसिकली जो बदनाम किया जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, तो वी आर द ओन पीपल हु बेसिकली क्रिटिसाइज आवर ओन ब्रांच। Because if you compare the medical faculty with the dental faculty, BDS MBBS just compare. MBBS they can't start their own practice, but being a BDS you can build up your practice like anything, not like anything. Saturation it is there only in the job, not in the practice. और if you are the good practitioner, और अभी तो ऐसा है कि डेंटिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द बोटॉक्स थेरेपी, वर्क ऑफ द एस्थेटिक थेरेपी, इतने इम्प्लांट थेरेपी, इतने ज्यादा उसमें एडवांसेस है कि पीपल अर्न मनी लाइक एनीथिंग इफ यू आर द गट गट्स टू डू इट। मतलब इट इज अबाउट गट्स टू डू इट। Only thing I just want nobody to, even after doing the MDS, don't go for the job. Job is not meant for the profession like us. In medical faculty, MBBS, MD,
they don't opt for the job. They go for the practice. They just want to apply their clinical knowledge to the patient welfare and get them settled. What we are doing, we are going for the job. And definitely colleges, they are the same. 300 colleges is there. And definitely job is going to be not more than 2000. Mhm. तो जॉब जब 2000 ही है और हर साल इतने लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली जॉब में सैचुरेशन आना ही है. Mhm. लेकिन मैंने जितने भी लोग देखे बीडीएस और एमडीएस, आई डोंट थिंक एवरेजली दे अर्न मनी very respectable earning they earn. मतलब 50,000 earning money per month, it is not the difficult job for the any of the people. And जो अच्छे डेंटिस्ट अच्छे कमा रहे, they are earning money like anything. So it is upon yourself to decide how you are going to start the practice. And if you are the best, you are definitely faculty जो अच्छे डॉक्टर है. इफ आई कंपेयर, आई एम द ओनर ऑफ द जियोद्रेक हॉस्पिटल मल्टी. मुझे बताया कि गायनेकोलॉजिस्ट 6 गायनेकोलॉजिस्ट रहता ना, उसमें से एक ही गायनेकोलॉजिस्ट चल रहा है. ही इज ओनली द अर्निंग द मनी गुड बिकॉज ही इज द बेस्ट इन दैट 6 गायनेकोलॉजिस्ट. सेम इज बेस्ट इन द 6 जनरल सर्जरी, ऑर्थो, Mhm. ईएनटी. मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है. अगर तुम अच्छे हो तो सस्टेन कर रहे हैं. कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंटल में ऐसा है कि आप 4 लोग कमा रहे और एक लोग नहीं कमा रहा है. जो एक बंदा नहीं कमा रहा वो जिंदगी में किधर भी गया तो कमा नहीं पाएगा. उसके लिए डेंटिस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. इट इज द हिज एटीट्यूड एंड हिज वर्क इज रिस्पॉन्सिबल. तो डेंटिस्ट आर वेरी गुड प्रोस्पेक्टस. तुम इंडिया के बाहर जाओ, मतलब डेंटिस्ट तो मतलब दे अर्न लाइक एनीथिंग. मतलब तो now अभी last 1 or 2 years now this budding dentists they are refusing to do the job and going for the practice. So it is a good trend and one day things will get reversed. Yeah, sir, you well said कि basically it's your efforts. तुम अगर efforts नहीं डालोगे तो किसी भी job में excel नहीं कर सकते हो. बराबर बराबर. Hmm. Coming towards the end of the show, sir, since I have taken your precious time, uh, just can you just tell the secret of your success to our budding dentists to motivate them? I mean, what always मतलब कभी तो ऐसा लगता होगा ना जब आप फेलियर की तरफ जाते रहते होंगे तो what एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या वो ऐसा चीज है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड देन यू हार्ड वर्क अगेन? See, it is discipline, 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 and anything. Well, if you are disciplined in your life, or from the study to your work, you definitely will get a success. Without discipline, you will not achieve anything. Just discipline your life. Wake up early and study. Don't think about the future. What human being is suffering due to the future worries and past regret. अपन एक तो फ्यूचर के वरीज के बारे में बात है और पास्ट रिग्रेट. यू नेवर लिव इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में जियो. तुमको आज क्या करना है. इफ यू आर सक्सेसफुल डूइंग, आज तुमने अच्छा अगर दिन में चीजें कर ले तो डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल. फ्यूचर में क्या चीजें होना है वरीज, वो 99% चीजें होती नहीं तुम्हारी लाइफ में. तू अपने आप को सोच के तूने इतना सोचाऊंगा मेरे मेरे साथ ऐसा बुरा हो सकता है, वैसा बुरा वैसा, उसमें से 99% चीजें तो हुई नहीं. सिर्फ 1% हुई. व्हाई टू वरी अबाउट फ्यूचर? व्हाई टू रिग्रेट अबाउट द पास्ट? पास्ट तो चला गया. जस्ट लिव इन द प्रेजेंट विद द डिसिप्लिन लाइफ एंड डेफिनेटली if you are disciplined, your life will be definitely successful. Thank you very much, sir. That was all for the show today. Thank you, sir, for being in the show and sharing your very personal experience of your dental journey. ठीक है. Hope Thank you. our listeners get to learn a lot from you, sir. Thank you very Thank you much, very much. sir. ठीक है. Thank you. Thank you, Ganand. Thank you, sir. That was all for today's show. Hope you liked it. Don't forget to like, share, and subscribe the Molar Bear.